हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राइट, इस क्वेश्चन में क्या है, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर है, इज फॉलिंग विथ इस प्लेन वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और जो ये रिंग है वर्टिकली फॉल कर रहा है। राइट, उसके बाद बोल रहा है एट पोजीशन एम एन क्यू द स्पीड ऑफ द रिंग इज गिवन, रिंग का स्पीड दिया है। उसके बाद बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग, आई मीन रिंग के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सिंस आपको पता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और रिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आएगा। एंड सिंस वी कैन टेक द मोशनल ईएमएफ विल बी right VBL. So EMF I can say here this will be VB and L. Right, this ring can be replaced with equivalent a straight rod which is passing across this. A second. Okay, so this whole ring, since the magnetic field is constant and uniform here, so this semicircular ring can be replaced with equivalent rod PQ, or you can say MQ. So this point is M and this point is Q. This is given in the question. So this is replaced here. Okay, so VBL. So what is the length of this rod? You can say this is, right, the radius of ring is R. So this length will be 2R. So this length will be 2R, right? Okay, so VBL. Right. Now you can say if you will apply, so which, right, so in this rod, which end will be at higher potential? Since see the V is going in this direction and the B is into the plane of paper. So if you will do the V cross B, so right, the B is like this into the, right, into the plane of paper. So V cross B if you'll do, the thumb is giving a rightward direction, so the Q will be at higher potential. So I can say the EMF will be this one with Q at higher potential, with Q at higher potential, because right, in this question the direction of V cross B, you can see like the direction of V vector cross product B vector gives the direction of, right, gives the direction of higher potential, higher potential. So in this question if you will do the V cross B, you will direction, right, thumb will give the direction, right, thumb will be in the direction of Q, so Q will be at higher potential. So see which option is coming. You can see this, right, option D will be there, VB into 2R and Q at higher potential. Okay, so okay students, I hope you understood this question.